A task duration, work and assignment units are interconnected. The mathematical relationship is simple and it's key to getting your resources assignments right every time. Always remember, duration is the length of a task from its start to its finish. If a task starts on Monday morning and ends on Friday afternoon, the duration is 5 days. So work represents the person hours it takes to complete the task. If a task has a duration of 5 days, but you are going to spend only 10 hours on the task, the work is only 10 hours. Assignment units, also referred to as units, are the percentage of assigned resources availability time dedicated to the task. Full time is 100%, half time is 50%. You can show units as decimal too. In that case, full time is 1.0 and half time is 0.5. Basic algebra is all it takes to understand the relationship between duration, work and units. Duration is equal to work divided by units. Suppose you estimate work at 40 hours and you specify that the resource work on the task is 50% of the time. Doing the maths gives you duration of 80 hours, which is the same as 10 full work days. So the duration will be 10 days here. Switching the formula around, the work equals duration multiplied by units. If you estimate duration to be 5 days and the resource work 40% on the task, the work is 2 full work days, which is 16 hours. Similarly, the project calculates units if you give it the duration and the work. Say you set the work at 40 hours and the duration at 4 weeks, that's 160 work hours. The percentage of time the resource work on the task is 25%, shows here as 0.25. Project has built-in rules about which values it calculates unless you give project specific instructions. The program tries to calculate duration first, then it will calculate work, and finally it calculates units as if you set the other two parameters. So your project will calculate the duration if you give it or work you input and units you input. Similarly, project will calculate the duration as work you input. If units are blank, then it will assign 100% or resource max units. In this example, project will calculate if you input the duration and units you input. Project will calculate the work if duration you input. If blank, project uses 100% or resource max units. And in case of units, the project will calculate if you duration you input and work you input. So let's study how to assign resources in project. As you can see here, आपके सामने ये project मैंने open किया हुआ है. So you can assign resources through different ways. Like आपके सामने जो Gantt chart open होगा, here you can see resource name. So I can easily assign resources from here directly. Like if I want to assign any resources, so आपके सामने drop down होगा. When you will click on it, so it will give you all the names of your resources. Since I have entered all resources for you here,
as you can see in resource sheets, all resources have been entered already and their rates have been given. So जब आप गैंट चार्ट में आके रिसोर्सेज असाइन करने लगेंगे, सो आप यहाँ पे क्लिक करें और आपके सामने सारे रिसोर्सेज होंगे। आप किसी भी रिसोर्स को चेक कर लें और जो ही आप इससे हटेंगे तो ये रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली आपके लिए असाइन कर देगा। एक मेथड तो रिसोर्स असाइन करने का ये है। दूसरा मेथड रिसोर्स असाइन करने का ये है कि आपके सामने जो रिबन ऊपर टॉप पे आपको नज़र आ रही हैं, आप यहाँ पे रिसोर्स रिबन पे क्लिक करें और उसके बाद आपके सामने असाइन रिसोर्सेज बटन होगा। आप सिंपली इसको सेलेक्ट कर लें। व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस असाइन रिसोर्सेज बटन, इट विल ओपन डायलॉग बॉक्स विच कैन easily जिसको हम यूज़ करके we can assign resources very easily, but all you need is to click on any activity, like for example मैं साइन कॉन्ट्रैक्ट एंड नोटिस टू प्रोसीड एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे एक्टिविटी का नेम ऑलरेडी लिखा आ गया। इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑलरेडी वी हैव। सो आप यहाँ पे किसी एक रिसोर्स को अगर आपने असाइन करना है तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे यू कैन क्लिक ऑन दिस असाइन बटन। सो यहाँ पे ये रिसोर्स ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा और बाय अज्यूम क्योंकि यूनिट्स हमने इसको नहीं दिए तो इसने ऑटोमेटिकली 100% अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स इस एक्टिविटी को यहाँ पे असाइन कर दी है। और ना सिर्फ असाइन की है बल्कि इसने इस एक्टिविटी की कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर दी है, क्योंकि जो अप्लायंस कॉन्ट्रैक्टर है इसकी यूनिट कॉस्ट, इसकी पर आवर कॉस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी असाइन की हुई है। सिंस 1 day इज इक्वल टू 8 वर्किंग आवर्स, सो 8 वर्किंग आवर्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय दी per hour rate, or you can assign multiple resources as well. Like for example may secure foundation permit एक और एक्टिविटी है। for example this activity will take 2 days to complete, so I want to assign resource to secure foundation permit through that dialog box, so I'll have to select this one and then I can click on the assign resources button। जब मैं यहाँ पे कोई भी रिसोर्स सेलेक्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टर को मैंने सेलेक्ट किया और उसके साथ मैं एक और रिसोर्स भी असाइन करना चाहता हूँ लैंडस्केप कॉन्ट्रैक्टर, तो आप सिंपली कंट्रोल की को प्रेस करें और यहाँ पे इसको भी क्लिक कर दें। तो ये मल्टीपल रिसोर्सेज वी कैन ईजिली असाइन टू एनी एक्टिविटी। अब देखें ये दोनों एक्टिविटीज़ असाइन हो गई, रिसोर्सेज असाइन हो गए, इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको टिक कर लिया, 100% यूनिट असाइन कर दिया और इसने टोटल कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर ली। जब इनिशियली आप इस डायलॉग बॉक्स को यूज़ करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा जब बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम पे जब आप 2 रिसोर्सेज असाइन करते हैं तो ये प्रोजेक्ट एज्यूम करता है कि सिंस दिस एक्टिविटी विल टेक 2 days टू कंप्लीट एंड इट हैज़ दीज 2 रिसोर्सेज बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक हो गया, मैं इसको बंद कर देता हूँ। आइदर यू कैन क्लिक ऑन दिस क्रॉस बटन और आप इस क्लोज बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। लेट्स असाइन अनदर रिसोर्स टू इट। तो देखें इट इज़ टेकिंग हियर 2 days टू कंप्लीट। जब मैं यहाँ पे असाइन पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल अप्लायंस कॉन्ट्रैक्टर को क्लिक करता हूँ और असाइन करता हूँ तो मेरी कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, मेरी ड्यूरेशन पे भी फ़र्क आएगा। अब देखें यहाँ पे इसने कॉस्ट भी चेंज कर दी, ड्यूरेशन भी 1.33 डेज से कर दी, क्योंकि अब प्रोजेक्ट को लग रहा है कि आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई एक और रिसोर्सेस इसलिए असाइन करना चाहते हैं क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट की इस एक्टिविटी को फास्ट ट्रैक करना चाह रहे हैं। तो ये मल्टीपल वे से हम इसको यूज़ करते हैं। और एक और एक्टिविटी को रिसोर्स असाइन करने का मेथड क्या है कि यू विल क्लिक ऑन दिस व्यू बटन एंड देन अंडर स्प्लिट व्यू टैब यू हैव डिटेल्स चेक बॉक्स। जब आप डिटेल्स चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके रिसोर्स नेम ऑटोमेटिकली आ रहे होते हैं और प्रीडिसेसर नेम आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंस्पेक्टर, लैंडस्केप कॉन्ट्रैक्टर, अप्लायंसेस कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी जो है 100% है और इनके ये वर्क कैलकुलेट हो रहा है। फॉर इंस्टेंस एंड दिस एक्टिविटी इज टेकिंग 1.33 डेज। एज्यूम करते हैं कि ये इंस्पेक्टर जो है ये 50% अवेलेबल है, 100% अवेलेबल नहीं है। व्हेन आई विल क्लिक ऑन ओके बटन तो यू कैन नोटिस दी ड्यूरेशन चेंजेस हियर। ओके पे क्लिक किया तो अब देखें ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली 1.33 से 2.66 पे आ गई। तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट में रिसोर्स, सबसे पहले रिसोर्स शीट में जाके व्यू में जाके आप रिसोर्स शीट में रिसोर्सेस एंटर करते हैं और जब आप रिसोर्सेस एंटर कर लेते हैं उनके आप रेट्स असाइन करते हैं और उसके बाद फिर आप जाके इसकी डिटेल्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं, आइदर थ्रू रिसोर्स नेम,
आइदर थ्रू रिसोर्स डायरेक्टली असाइनमेंट हेयर, या फिर आप प्रोजेक्ट पे जाके व्यू पे जाके और डिटेल पे क्लिक करके और इस तरह से भी आप लोग रिसोर्सेज असाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ वी कैन असाइन रिसोर्सेज एंड हाउ कैन वी कैन फाइंड टास्क ड्यूरेशन, वर्क एंड यूनिट्स। थैंक यू।